Hello friends, welcome to my YouTube channel Physics Gyan Parwa. In this series we are talking about the statistical mechanics. Statistical mechanics is the mechanics which is based on the statistics, and statistics is working on the probabilities. So in the forthcoming classes, we will be going to discussing about the probability and probability theories, which would be very essential to understand the statistical mechanics course very well. So we will be going to start with the understanding of the probability. So basically, with the basic knowledge, probability is a chance to occur. So let us discuss this concept with an example. हम सभी लोगों को ये पता है कि whenever a match is going to start, before starting the game, two captains of both the teams come on the ground and a coin is going to be tossed in the sky. A captain will have a wish that head must come on the top. So, what is this tossing of the coin and what is the meaning of the head to come on the top? So, you must keep in mind tossing of the coin. Tossing of coin is known as the event, and getting a head on the top is a output of this event. So output may not only the head, but it may also be the tail. So if toss is there, then the event either have a output head or tail. If captain wish to have a head, it is a desired output or it is a favorable output. And if tail comes, it is a non-desired output or it is an output which is not favorable. But it does not mean probability will not be calculated for the non-favorable outcomes. Probability can be calculated for the desired output as well as for the non-desired output. It may be true for both the outputs. So you may observe that whenever a toss is coming on the ground, the chance to get a head or chance to get a tail on the top, they are have the equal chance. Okay, so the event which are having the equal chance of occurrence, matlab either head may come on the top or at the same time tail may come on the top. This is the events which are known as the events which are equally likely events. Means the outputs are having the equal chance to come on the top. Either head may come on the top or tail may come on the top. So now, how do we define the probability? Probability of any event to occur. A probability for this particular case to get a head on the top. So let us examine the situation. If we make a toss, then how many ways a coin will have head on the top? So the answer, let us say we are marking the head by the A. When the toss is in the sky and when it comes on the ground, the number of ways in which head will come on the top, it will be 1.
एट द सेम टाइम अगर हम आपसे पूछें कि नंबर ऑफ टाइम्स इन विच हेड विल नॉट कम, व्हाट डज इट मीन? अगर हेड नहीं आ रहा है, इसका सिंपल मतलब क्या है? वहां पर टेल आ रहा है। तो एक बार जब आप टॉस करोगे तो हेड कितने बार आएगा? एक बार। और हेड कितनी बार नहीं आएगा? इट विल ऑल्सो बी वन। बिकॉज अगर हेड नहीं आएगा तो हेड कितनी बार नहीं आएगा? इट इज ऑल्सो द वन। सो हाउ डू वी डिफाइन? यू मस्ट keep in mind what is this A? It is the ways, you must write down, in which we get head on top, and B is the base in which head will not that means A is the ways जिसमें आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, एंड B इज द वेज जिसमें आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। देन हाउ डू वी डिफाइन द प्रोबेबिलिटी? मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी इज रिटन बाय द नंबर ऑफ वेज in which an event occurs divided by total number of ways। तो इसको अगर हम लोग इस पर्टिकुलर एग्जांपल से रिलेट करें तो हम देखेंगे जो टॉस किया जा रहा है उसमें हम क्या चाहते हैं? वी विश टू हैव अ हेड ऑन द टॉप। बट ये जरूरी नहीं है कि हेड आ ही जाए। अगर एक बार हेड आता है इस इवेंट में और इस एक्सपेरिमेंट में, तो जो हेड नहीं आएगा उसके भी नंबर कितने हैं? वन है। तो व्हाट इज दिस? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे इस एक्सपेरिमेंट के? दे मस्ट बी टू। आइदर हेड विल कम, और अगर हेड नहीं आ रहा है तो वहां पे टेल आएगा। इसका मतलब हेड आने के कितने तरीके हैं? वन। और हेड ना आने के कितने तरीके हैं? वन, जिसमें आपको टेल मिल रहा होगा। तो हम लोग टोटल वेज कैसे लिखेंगे? वन फॉर हेड आने का एंड वन फॉर हेड ना आने का। भाई टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। तो दिस वन इज फॉर नंबर ऑफ वेज इन विच event will occur, means head will come. This is number of ways in which head will not come, and total number of ways in which an event has to occur, that is the head must come on the top, that is the one. If we simplify this, this is the number of ways in which head is coming on the top, that is the A. So this could be written as A. This one could be written as A again, and this one could be written as B. You can check from here. Okay. So now this is the probability to get a head on the top. And if we wish to calculate the probability to not get a head on the top, what does it mean? अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया? Probability to get a head on the top. अब हम क्या करना चाहते हैं? Probability to not get a head on the top. तो अब आप कैसे करेंगे बताइए? टोटल वेज कितने होंगे? हेड ना आने के दे आर वन, हेड आने के दे आर अगेन वन, एंड हेड के ना आना कितनी बार आएगा एक एक्सपेरिमेंट के दौरान? इट इज वन टाइम।
हेड ना आने का मतलब आप लोग समझ के रखिएगा, वहां पर क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। तो इन अदर वर्ड्स वी आर बेसिकली कैलकुलेटिंग द probability to get a tail on the top. That's the meaning. Okay, so we could again probability not to get a head, probability not to get a head, तो यहां पर ये वन क्या होगा, probable number of ways in which head will not come, बिकॉज ऊपर क्या रखते हैं हमेशा, नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट शुड अकर। यहां पे इवेंट क्या था, हेड शुड अकर, पर यहां पर इवेंट कौन सा है, हेड शुड नॉट अकर। तो दिस वन is actually your B, and this one I am again putting it to B, and this is as A. It could be rewritten as B upon A plus B. तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर। अगर हम दूसरे वर्ड में कहें, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। इवेंट कौन सी चाह रहे हैं हम, हेड चाह रहे हैं, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी इन विच इवेंट विल फेल एक्चुअली। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, एक्चुअली इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द event to occur, and this is the probability of the event to fail. You must keep in mind we have got the relationship. So if we look at the summation of the two, what does it mean? If we look at the P of event to occur and probability of event to fail, if we add these two, it is A upon A plus B plus if we solve this, it is A plus B, it will cancel out and it will again give us 1. So we have obtained an important result that if we add the probability of occurrence of an event with the probability of failing that event, it must always be 1. What does it physically signifies? वो ये बताता है either event होगी और event नहीं होगी। तो होने की जो probability है उसको अगर हम ना होने की probability में add कर देंगे, we would always get to 1 value. So now, friend, we will be continuing with this discussion, and we are again considering a new example. So the example which will be considered, you must pen down, it is the example of rolling of a dice. डाइस का मतलब होता है जो लूडो का गेम होता है, उसमें हम हिंदी में अगर बोलें उसको हम लोग पासा बोलते हैं। लूडो के गेम में जब उस पासे को रोल किया जाता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो हमारा डाइस है, डाइस इज एक्चुअली अ व्हाट, इट इज अ 6 फेस्ड स्ट्रक्चर, जिसकी हर एक फेस कैसी होती है, होमोजीनियस होती है, और हर एक फेस पर डॉट्स लगे होते हैं। वो एक सिंगल डॉट हो सकता है, सो अगर हमारे पास कोई डाइस है, अगर उसको हम लोग रोल करते हैं, वी कुड हैव आइदर 1 ऑन द टॉप, वी कुड हैव आइदर 2 और 3 4 5 एंड 6। इन दिस वे अगर हम लोग किसी भी डाइस को रोल कर रहे हैं, द पॉसिबल आउटकम्स हैव बीन शोन ऑन द बोर्ड। मैं
इसको जस्ट न्यूमेरिकली लिख लेता हूं. इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6. तो अगर आप लोग देखेंगे, अगर इसको डाइस को रोल करेंगे, यू विल फाउंड ओनली वन आउटकम एट अ टाइम. So how many possible outcomes are there? They are 6 in number. The first one is 1, second one is 2, 3, 4, 5, 6. In this way, total number of outcomes, of rolling of a dice, they are 6. What are these 6? These are the numbers. So either 1, 2, 3, in this way up to 6 may come on the top. So if I ask to you, calculate, you must calculate probability to get so how do you calculate this? So how do we calculate this? In the denominator, there are total number of ways with the help of the formula. So, how many total number of ways are there? They are 6. And to get any number, it is not 1, it is not 2, it may be 1, it may be 2, it may be 6, it may be 5, it may be 4. So, to get any number, how many possibilities is there? They are 1. अगर 2 आ रहा है, वो कितने तरीके से और कितनी वेज से 2 आ सकता है अगर आप एक सिंगल डाइस को रोल करते हो. द पॉसिबल वे टू गेट अ 2, फॉर एग्जाम्पल, इट इज ओनली 1. इफ हमने इसको रोल किया, आई विश टू गेट अ 5 ऑन द टॉप, हाउ मेनी वेज? इट इज ओनली 1. इफ आई विश टू गेट अ 6 ऑन द टॉप, हाउ मेनी वेज? इट इज 1. So I have put it to 1 and divided by the 6. 6 are the total number of ways. 1 is the number of ways in which event may occur. Event कौन सी है यहां पर? To get any number on the top. So this is the probability. Now, if I say to you, calculate probability to get an even number on top, how would we do this? Denominator में क्या आएगा? Total number of ways are 6 and probability to get an even number. तो even number आने के कितने तरीके हैं? Even number यहां पर कौन कौन से होंगे? Even numbers are either it may be 4, it may be 4, it may be 6. They are the even number. And how much they are? They are in total 1, 2, 3. So they total are 3 numbers. So यहां पर क्या रखना पड़ेगा? Total number of ways जिसमें even number आ सकता है. The right answer is, it is 1 by 2. Again, you can do it. Calculate probability to get an odd number on top. How do we do this then? What is your answer? Total number of ways are 6. And what are the odd numbers? They are either 1, 3 or 5. How many numbers are there? They are total 3. 1, 2, 3. So, on the top it will be 3 again. It is 1 by 2. Now, if I say that calculate probability to get a number less than 7. How do we do this? How do we do this? Total number of ways are 6. And how many total number do we get? Which is less than 6? We can get 1, we can get 2, we can get 3, 4, 5 and 6. So there are total 6 ways in which the number will be less than 7. So
there will be a 6 and the probability is coming out to be 1. तो ऐसे इवेंट्स जिनमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है, दिस इज द events which are known to us are pure, which are known as sure event. So sure event are those event for which the probability is maximum. You must keep in mind. Lastly, अगर मैं आपसे बोलूं calculate probability to get a number which is greater than 6, बताइए आप लोग कैसे करेंगे? वो कितने तरीके हैं जिसमें रोल करने पर आपको 6 से ज्यादा नंबर आ जाए? इट मे बी 7, इट मे बी 8, इट मे बी 9. योर ऑब्वियस आंसर इज 0. So what will be the probability for this? It is 0 by 6 and the answer is 0. तो वो इवेंट्स जिनके लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, those events are named as impossible events. तो हम लोग ध्यान रखेंगे वो इवेंट्स जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को 1 रखते हैं, दे आर श्योर इवेंट्स, और वो इवेंट्स जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को 0 रखते हैं, दे आर दी इम्पॉसिबल इवेंट्स. So friends, thank you very much. Have a nice day. Please do subscribe my channel. Thank you very much.